Hey guys, welcome to Travelsheesh. In today's video, we will show you the Eid festivities in Qatar. We have some fun with the Eid mascots. We will give you a brief tour of Oxygen Park in Education City. So come with us and enjoy Eid festivities with us. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड ईद उल अधा मुबारक। आज हम आए हैं ईद को एंजॉय करने के लिए। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, मैं हूं सदर, मैं हूं आतिफ, मैं अफान। हम आपको लेकर चलते हैं कतर की डिफरेंट प्लेसेस पर। आज हम आए हैं ऑक्सीजन पार्क में। इट्स अ वेरी नाइस पार्क। यहाँ पर वाटरफॉल भी है, यहाँ पर आपको बोटानिक गार्डन भी मिलेगा एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप यहाँ आकर अच्छा खासा टाइम अपना एंजॉय कर सकते हैं। ओके सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। लेट्स गो। हमारी आज की वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं ऑक्सीजन पार्क, which is a public park in Education City on the outskirts of Qatar's capital Doha. अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम आपको कतर की डिफरेंट प्लेसेस पर लेकर जा रहे हैं। And if you are new to our channel, so you can go back to our channel and see our previous videos for Qatar and Turkey series as well. And if you like our content, then please like, share, comment and subscribe to our channel for more travel videos. This beautiful lush green park has two zones, the western side for sports and the eastern side for recreation, including children's playground, an amphitheater and individual gardens. There is no entrance fees and parking is free as well. पार्क का ये एरिया बिलोंग करता है उन प्लांट्स के साथ जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। यानी यहाँ सारे वो ट्रीज एंड प्लांट्स मौजूद हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में किया गया है। उनके रेफरेंस भी लिखे हुए हैं और उनके नाम भी दिए हुए हैं। As you can see, this is the Quranic Botanic Garden. यहाँ पर सारे प्लांट्स जो लगे हुए हैं इन द रेफरेंस टू कुरान हैं। अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। अभी हम आपको अंदर भी लेकर जाते हैं। विल टेक अ राउंड ऑफ द Quranic Botanic Garden. अब हम आपको पार्क की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं जहाँ पर वॉक ट्रैक्स भी हैं, ग्रीनरी भी है, प्लेग्राउंड्स भी हैं एंड अदर फैसिलिटीज भी है एंड यू कैन सी द वाटरफॉल एज वेल। तो आज हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ऑक्सीजन पार्क में आए हुए हैं हम लोग एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स वाटरफॉल। इट्स अ गुड पार्क एक्चुअली। इट हैज़ अ रेसिंग ट्रैक, ऑल्सो साइकिलिंग ट्रैक, सो आई विल टेक यू देयर। As you can see guys, this is the beautiful waterfall. You can see the color.
The design of Oxygen Park was inspired by the formation of molten soil and wind-eroded rock in a natural desert environment. और ये लश ग्रीनरी आपको इतनी गर्मी में भी ठंडक का एहसास देती है, यानी आपको हर तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलती है। आपको लेकर चल रहे हैं इनसाइड एरिया में, जहां पर फूड कोर्ट है, लाइब्रेरी है, गेमिंग एरिया है एंड अदर फैसिलिटीज हैं। दिस सेक्शन बिलोंग्स टू बुक्स। यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं। हियर यू कैन सिट एंड रीड योर बुक्स। मोस्टली यहाँ पर अरेबिक बुक्स हैं, बट सम आर द इंग्लिश बुक्स एज वेल। सो यू कैन टेक द बुक्स, यू कैन सिट देयर एंड यू कैन रीड देयर। So it's a very nice place to come, sit, relax and read the books. Recently the cases are again on the rise, so the face masks are inside compulsory. So हमने face mask लगाए हुए हैं, otherwise it was convenient to not use the face mask, but now it's compulsory to use the face mask all the indoor places. This is the area for indoor games. यहाँ पर चेस भी मौजूद है। They have the billiard as well. They have table tennis and lots of indoor games. I'm playing the tennis. Look at me. बॉलिंग alley। यहाँ पर आप बॉलिंग कर सकते हैं आकर। इट इज़ अराउंड 15 रियाल per person। Let's start the game and enjoy the game. Let's go. This is the ticket counter where you can buy the ticket, which is around 15 riyal. They will give you the shoes to play the ball. बॉलिंग एंजॉय करने के बाद हम बड़े फूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि हमें लग चुकी थी अच्छी खासी भूख। Afan, are you hungry? Yes. What are you waiting for? I'm gonna wait for a kid's meal, chicken sandwich. Okay, that's nice. Yes, my food is ready. I've been waiting for this moment. You gotta be kidding me, those are really. I'm happy for this food. So this is food for Afan. Burger and fries. Are you hungry? I wanna eat. I can't even wait. Okay, let's eat. Take the burger. And we have the wraps here. Hi guys. So बॉलिंग alley में आतिफ को टफ टाइम देने के बाद मुझे लग रही थी भूख, और आतिफ को भी। तो हम आए हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में और हमने ऑर्डर किया है अपने लिए सैंडविच एंड अपान ने अपने लिए लिया है बर्गर। सो हम करते हैं अपना फूड एंजॉय और आप कीजिए हमारा व्लॉग बाकी का एंजॉय।
After having the food, हम निकले बाहर to the tram station. यहाँ पर चलती हैं trams as well, so you can take the trams and go inside the city as well. ऑक्सीजन पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़े टुवर्ड्स द मॉल ऑफ कतर, जहाँ पर भी ईद की फेस्टिविटीज़ चल रही थी. एंड इट इज़ नॉट टू फार फ्रॉम ऑक्सीजन पार्क एज वेल, तो हमने कहा चलो वहीं का रुख करते हैं. उसके बाद हम बढ़े द पर्ल कतर की तरफ. वहाँ भी बच्चों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ रखी हुई थी. वहाँ पर आर्ट, क्राफ्ट, बलून्स एंड मैनी मोर थिंग्स. This is how we celebrate Eid in Qatar. If you like our videos, please like, share, comment and subscribe to Travelsheesh for more videos. If you have any questions, please place it in the comments and we'll see you in the next video. Bye!